अरे नाच ऐसे हो रही है। मुझे अरमान से मिला दो। रिश्तों के भी अभी रूप बदलते खोल काफी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कैमरा। Hello everyone, welcome back to another vlog. I'm packing to go, like क्या बोल रही हूँ मैं? I'm packing to go to Mumbai. I'm packing because I'm going to Mumbai tomorrow. सुबह की early morning flight है and मैं अब जाके अपनी packing start कर रही हूँ. मतलब literally ये pack किया मैंने. Only this and बाकी सब ऐसे फैला हुआ है and Milo is also very confused. बहुत ज़्यादा chaos हो रहा है. So just wanted to start this vlog by showing my hair. Looks nice. एक दिन पहले आई वेंट टू H&M टू बाय सम क्यूट कम्फी क्लोथ्स फॉर मुंबई एंड मैं इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी. आई कुडंट फाइंड एनीथिंग. सब कुछ बहुत यूफोरिया वाइब था एंड प्रैक्टिकली ये कपड़े बहुत कंफर्टेबल नहीं है. सो आई वाज प्रीटी डिसअपॉइंटेड. आई रियली लाइक्ड दिस ऑरेंज कॉर्सेट टॉप. इट वाज वेरी वेरी क्यूट, लुक्ड रियली नाइस ऑन माय बॉडी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज खत्म हो गया था द नेक्स्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड टू परचेज इट. आई ऑल्सो गॉट टू ट्राई दिस क्रॉप टॉप स्कर्ट बट काफ़ी डेड कलर्स थे. डिड नॉट लाइक इट दैट मच. एंड दिस zigzag dress, oh my god, you see the cuts side में, it was a vibe. Again जब मैं next day इसको लेने गई थी, my size was not there, which was quite sad. I am in Mumbai. I'm so happy. I'm so excited. This is my first time in Mumbai. I've never been here. And Shalini is also here at the airport. We might meet. I have no clue. But I cannot tell you, my excitement level is max. Like literally max. शालिनी फिर से हाई करना बनता है. हमने कहने हाय एक्साइटमेंट के साथ बोलो. हम लोग दोबारा से ब्लॉग के लिए कर रहे हैं. हम मिल चुके हैं. हो गया. हमें 5 मिनट पर ब्लॉग के लिए करना पड़ता है. 5 मिनट ब्लॉग के लिए करना पड़ता है. जस्ट फॉर द ब्लॉग. हाय पीपल. Hi, you all know. Madhuri is tired but थोड़ा सा हम इसको रेस्ट ये तो कितनी टिप टॉप बन के आई है यहाँ. मेरी हालत दिख रही हूँ. यार. भोपाल इज नॉट फार फ्रॉम मुंबई यार. देहरादून पता नहीं कौन से इंडिया के कोने से आई हूँ. चलिए पहले आप 10 or पहले 3. पहले मादी गिर मत जाना. ठीक है. तुम्हें नींद की जरूरत 10 or 3 किसका है? This is my. यार मैं छोटी हूँ अभी. मैं अभी छोटी हूँ. ब्लॉग में रूम दिखाओ. वो दिखाएंगे ना. पहले आप कुछ बता रहे थे. मेरी हेयर कट की तारीफ कर रहे थे. किया. माधुरी. You look very nice. उसका शॉट देखा ना. I was like wow, I need that ये haircut. चाहिए बाल. और मैंने डिट्टो जाके उनको बोला ऐसा चाहिए मुझे. पर ना आप पे ज्यादा अच्छा लग रहा है. हाँ. आई थिंक आपके ना ज्यादा डेंसिटी है. मेरे बहुत कम बाल है. मेरे पास 2 बाल है. उसे 2 बाल में ही कट मार के एक बचे हुए हैं. 2 में से अभी एक ही बचा है. तो मेरे 4 है. ठीक है. कि मेरे भी इतने कोई नहीं यार काफी बाल है. मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है. This is the क्या haircut, not the hair. I think it's the haircut. No, it is the hair plus haircut is like cherry on top. You should understand that. Yes, okay. यार रूम टूर करा दो मेरा. हाँ. मेरे पता दिमाग में क्या चल रहा है. क्योंकि साल रिश्तों के भी अभी रूप बदलते खोल. पर मिलवा किससे रही हूँ? बेड से. This is my bed. नाइस. मैं सोएगी. ठीक है. This is something. Yeah, it's self-explanatory. Corner, one corner. बैठेंगे हम chill करेंगे शालिनी and I. Then थोड़ा सा इस साइड जाके there's this washroom. And something that Himadri loves.
सबको पता है, सबको पता है, मैं हमेशा होटल में किसी को भी बेड छोड़ो, उसको बस बाथटब चाहिए, मिल गया. मुझे बस बाथटब चाहिए, मैं खुश हूँ, मेरी ट्रिप सफल रही, like literally, and that is business area. That is the business area. Business area, and this is what I like. हाँ. यहाँ पे बैठ के मेकअप करो, मैं साड़ी पे प्रेस कर. That's me. Hi. Hello. अरे आप ये अपना ऑफिस कॉर्नर भूल गए. धन्यवाद. रूम टूर समाप्त. I am in my bathtub currently and look at the view. I mean, it's so pretty. You see, that's the sea, and that's a boat going around. How cool! Like, abhi tak I'm enjoying Mumbai. The view is to die for. The hotel is on point, and I'm very excited for today's event. Hello everyone, what is up? I am at 4 Points, Mumbai. I don't know if I told you guys that this is my first time I am visiting Mumbai. मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं आई हूँ, हमेशा से मन था, but I just couldn't. I mean, कोई opportunity नहीं आई है, and I even did not tell you guys what I'm doing in Mumbai. So basically, today is 5th April and आज एक event है which is being organized by Mama Earth in collaboration with Femina. So they are hosting an award function for people who are doing good for the society, apart from content creation and even through content creation जो society के लिए अच्छा कर रहे हैं. So उसके लिए award function है. So I am expecting to see a lot of people. बहुत सारे celebrities आ रहे हैं, बहुत सारे content creators आए हैं. शालिनी से तो already मिल चुके हो. तो शालिनी and I, we are staying एकदम एक अगल बगल वाले रूम में. स्पेशल रिक्वेस्ट बोली थी कि मैंने कहा प्लीज हम दोनों को साथ में रुकवाना, हम साथ में रहना चाहते हैं. आई हैव सो मेनी पीपल टू मीट. आई बी मीटिंग सारा, आई बी मीटिंग हेली, मानसी, मृदुल एंड लाइक द गैंग. आई बी मीटिंग एवरीबडी. लास्ट टाइम मैं सबसे मिली थी जब हम दिल्ली में मिले थे, वो भी मामा अर्थ का इवेंट था, वहाँ पे मिले थे. ऑलमोस्ट 6 हो गए. आई वॉज सपोज टू स्टार्ट गेट रेडी 5 बजे, पर शालिनी मेरे रूम आए और तब से हम बस गप्पे मार रहे हैं. टाइम का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. आई एम श्योर आप सब बहुत क्यूरियस होंगे कि मैं क्या पहनूंगी आज. सो आई नो दैट एवरीवन विल बी वेयरिंग something western-ish, and I wanted to do something different. I wanted to wear a sari. I wanted to go ekdam desi, and you can never go wrong with sari, you know. Like, sari is a classic piece that can never look overdressed or underdressed. It's just going to make you look graceful and elegant. So today I'm wearing this beautiful chocolate brown beige साड़ी. एकदम plain साड़ी है, but side में border है और plain blouse भी है. blouse मैं पहन चुकी हूँ क्योंकि makeup करने के बाद हम blouse नहीं पहन सकते. थोड़ा सा और glow serum because I want my skin to glow today. And I look sleep deprived. Look क्या, I am sleep deprived. मैं सोई नहीं हूँ. मैंने literally all nighter pull off किया है. मैं पैकिंग कर रही थी, then मुझे कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने वीडियो बनाया, ये किया वो किया, and लिटरली मैं पूरी रात उठी हूँ, पूरा दिन मैं एयरपोर्ट में भी नहीं सो पाई. कीपिंग माई स्लीप डिप्राइव स्टोरी अपार्ट, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ. सो आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड माई सीरम, मॉइस्चराइजर, स्किन प्रेप हो चुका है. एंड फॉर माई फाउंडेशन टुडे आई विल बी यूजिंग द न्यूली लॉन्च मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन which also contains vitamin C, which is amazing. Now as the name suggests, it is a glow foundation and I truly agree with it. ये एकदम natural लगता है skin में. It gives that beautiful natural glow from within kind of look, and it stays for a really long time on this skin. If you have pigmentation like हल्का सा darkness around your mouth or around your forehead area, this will even it out without making your skin feeling heavy or cakey, which is great. I don't personally like using foundation जो heavy लगता है skin में. If you have been following for a while, you know
what I mean. I love wearing a natural looking foundation, and this is it. As mentioned, this foundation is packed with the vitamin C and turmeric, and the best part about this foundation is that it comes with a pump. Who doesn't love a good pump in foundation? I absolutely love when companies launch foundations with pump. It makes it so easy to travel with. This is the bottle. It comes in a frosty glass packaging. You can see the product name here. Comes with a pump, which is pretty cute, and iska outside packaging is like this. So today, right now, I have two shades: 07 Toffee Glow and 06 Almond Glow. Now, if I tell you honestly, they have launched 7 different shades, and I don't know if you guys have watched my previous videos or not, but Mama Earth ने अभी recently 2 different type के lip colors निकाले थे. एक lipstick निकाली and एक lip serum निकाले, and I am obsessed with those products. I mean, क्या outstanding lip products निकाले हैं उन्होंने. I was so happy when I received this package. I was very happy, very curious to see कि क्या है foundation, क्या claim करता है, how it sits on the skin and all that. But when I saw the shade range, I was not very impressed because Mama Earth ने वो lip colors निकाल कर इतने सारे variants के साथ, they literally like मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मामा अर्थ से. आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देम. नो बैकलैश, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड स्टार्ट दैट दे हैव लॉन्च 7 different shades, and I'm hoping that they launch more shades in the near future. Really looking forward कि मामा अर्थ और क्या क्या नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहा है. I mean, they are literally killing their launches. I am shook till date. So for the foundation, I just took out one pump. इसको मैं अपने फेस पे ऐसे करके डॉट कर दूंगी. आई ऑलवेज लाइक टू अप्लाई थोड़ा थोड़ा, एंड देन कभी भी अगर मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अप द कवरेज अ लिटिल मोर, आई कैन ऑलवेज डू दैट later. I want to use a brush to blend this. I think I need a little bit of more coverage. एक layer लगाया है and my skin looks very natural. And the best part about this foundation is you can always build up the coverage according to your liking. This Glow Serum Foundation by Mama Earth gives an instant glow that stays up to 12 hours. It has no toxins, making it perfect for all skin type. I really appreciate their Plant Goodness initiative, where every time you place an order from their website, they will link your order to a tree that they will plant on your behalf. And by 2022, Mama Earth is aiming to plant 1 million trees. Now you can purchase Mama Earth products on Amazon, Flipkart, and even from their official website and app. And you can even use my coupon code Himadri2022 for 20% off if you purchase anything from Mama Earth's official website and app. If you want to check out their newly launched Mama Earth Glow Serum Foundation, I'll make sure to link the products in the description box below. This was the final look, you guys. I absolutely loved my makeup, jewelry, साड़ी सब एक साथ इतना सही लग रहा था. But unfortunately, I forgot to turn on the audio. Fun fact, ये साड़ी मैंने खुद से पहनी है. If you guys know, मम्मी मुझे साड़ी पहनाती हैं. And इस बार कोई भी नहीं था तो मैंने खुद से किया. मम्मी वीडियो कॉल में थी, मुझे हेल्प कर रही थी. And please आगे पीछे हो गई थी तो शालिनी helped me with that. But I was so proud of myself. मतलब क्या मस्त साड़ी ड्रेप की मैंने. Let me know in the comments down below. What do you think? कैसा क्या मैंने? Did you like the way I draped it? क्या थोड़ी सी कमी थी? Let me know in the comments down below. Footage. हम एक दूसरे को, oh, you're vlogging yourself. शालिनी, what is up? हेलो. अच्छा यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना. हाँ यहाँ देखना है, बहुत डिफिकल्ट है वहाँ पे ना देखना. Extremely difficult. हेलो, गुड कैमरा. लाइट अच्छी है यहाँ पे. Skin looks flawless. Thank you. Why or yours? Ours. 1, 2, 3, come. मैंने देखा. अब हाथ मारो. You're looking so pretty. You look so pretty. No, I love the eye makeup. No, on point. So कितने badass बन के आ रहे हो. मैं यहाँ पे ऐसे में बहुत pretty आ रही हूँ. कैसे हैं आप? How are you doing? Perfect. How are you? All good. I'm waiting for Priti. I'm very tired. Why is that everybody's first impression? I met Shrivai last month and she's like, but you're so tiny. And I was like,
Why do I look so I pretty? said the same thing to Shimay that you're so tiny. Shalini. Hi. Nice to meet you. फिर से आना ठीक है मैं देखा मेरी हाय ओ माय गॉड कैसे हो उस पर वेरी प्रिटी Thank you so much. everyone's looking so pretty You gotta go. Go ahead. You go, we'll take there's you. no option you have to go हमें मोटिवेट करो प्लीज यार मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई पहले मोटिवेट करे, मुझे थोड़ा ना अच्छा फील हो, फिर मैं उसके साथ साथ पीछे पीछे निकल जाऊँ। निधि will go मेरे अंदर से ऐसे हो रही है। I swear finally thank you you too say hi to my vlog You're vlogging? yes So nice. I am I should too. Mumbai आई है first time hi Simi oh hi oh my god hi you look lovely god that overacting back नहीं, you look lovely too. काफी ज़्यादा close proximity में है camera. हम मिलेंगे फिर से मिलेंगे for the vlog What's up? Simi says hi. Himadri is panicking, guys. I think. Seriously, and in fact, as everyone says, it was my brother's wedding, and somehow you kept suggesting, your thing, because मुझे छोटे-छोटे ideas चाहिए थे. I'm very bad at कपड़ों वाला, makeup वाला, scenes and transitions. So I subscribed to your getting angles. दिखना चाहिए ना गरिमा जी बात कर रहे Thank you so much. I am glad. Like, the hair. how was your experience Shalini मुझे अरमान से मिला दो. अरमान को जाके बोल अरमान से मिला दो प्लीज. अभी वो अरमान से मिला दो. Hi everyone, I'm Pankaj Gilwani, Femina Miss India 2016 and now an actress, and I love our girl's work. She's just been so amazing at it. I love the originality that she shows, and it's just something that you can actually follow, like step by step. I love it. That's amazing. Thank you so much. क्या? क्रश है क्रश. मिलवा दो. अरमान लेके चला 3 साल बाद. Go find him. Go find him. So cute. Don't fall. Go Shalini. Yeah. So we just did something very fun. It was a planned moment for all of us. Yes, 360 something, but it was good. We'll be inserting pictures. Yes, and videos. कितने अच्छे लग रहे हैं हम लोग आज सब. या फोटो लेंगे आप? Yes. किसका सामान छूटा है? अब ले ले. Charlie's given up her existence and everything. You carry such a big Setup. Charlie's left her existence for her photography. Yeah. The voiceover though. I can't. I watched you. क्या हो गया तुझे? I love her. I love Isha Gupta. Guys, Himadri 4 floors just right now. This is a Shantanu moment, like my version of it. I think No, I'll don't take cry. a sip. I Don't love. cry. No, I won't. But she's. She's very pretty, I agree. She is. Himadri's fangirl moment is happening, guys. Hello, gorgeous. Go Himadri, go for it. Yes, yes, queen. Yes, yes. यहाँ पे you all can clearly see how intelligent I am. मतलब यहाँ पे I'm literally vibing and I legit forgot to turn on the mic and Shalini and I were just singing and I don't know what's happening, but it's pretty funny. I think Sarah and we were talking about something, I don't know, but we were talking about something which is crazy because I seriously cannot make out
हम क्या बोल रहे थे, but anyways, enjoy this footage of us just talking with this weird voiceover. Also 1 minute silence for सारा, जो भी वो बोल रही थी कैमरे को, एंड उसने मृदुल को भी कुछ बोला, एंड मृदुल ये दोनों कुछ मिलकर बोल रहे थे कैमरा को. सॉरी गाइस, तुम लोग कुछ बोल रहे थे, एंड माय इंटेलिजेंट ब्रेन जस्ट this is so funny, I swear. I even met Aditi, aka that quirky miss. Her vibe was so warm, welcoming and so cheerful. हम लोग कुछ तो बात कर रहे थे, पता नहीं हम किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे थे या हम पता नहीं क्या कर रहे थे, but it was so nice to meet so many people. All right. Ghazal, I have a question for you. Could you tell us a little bit about the origin story of Mama Earth? How did it happen? It's like we all know, Mama Earth is a personal care brand. So is the story. It's a very personal journey which gave life to Mama Earth. No, I just have to thank Mama Earth and Femina, and the fact that I feel immensely proud and grateful and joyous knowing that I've been associated to a project, Chandigarh Kalyashiki, which is why I'm getting the award. And the fact that Gattu, Abhishek Kapoor, put his faith in me and trusted me with Manvi, for that I'm eternally grateful. About the brave choices, and all I can say is I didn't have an option. I had to deep dive in the deep end. Yes, I had no other option, but then yes, when love and success followed, then I did have a choice, but then I guess deep end में dive करने का मजा आ गया था. Everything Ranveer does, I take it personally. Ranveer Singh! Ranveer Singh! Ranveer Singh! क्या दर्जा दिया है, शोमैन ऑफ द जनरेशन. Bit much. Yeah, I mean, honestly, thank you very much, Femina. Thank you very much for this darja. I get an opportunity to thank the team at Unkink that works so hard to propagate the welfare of the deaf community, and my deepest thanks to all of them who work with such pure intentions to do something good. I'm really proud of them. Since we're here at Femina, must tell you, it's a cult magazine, we can all agree. I used to read Femina as a kid because I used to come home from mom and I used to open and read it. I'm a Femina reader since I was a kid. The life force, the spirit, they are the center of my universe. They are everything, and I'd be nothing without them. Don't need no something, don't need no changa. I'm Femina, Femina. I'm as Femina as it gets. Yeah, imagine. And then what a journey. Got into show business somehow, miraculously. And then it's been a crazy time. I came on the cover once. I featured on the cover of Femina once, which was like, it was huge, like 3 times. Susan, Somana, everybody in my team, thank you for making me what I am. Thank you. Kamal hai yaar. I mean, I'm all for like equality and all, but this is like नाच. वो बेटी को देखो क्या बोल रहा है. अरे नाच.
आज बंदे आज तो हो ही जाए. I would like to also express what I feel about this gentleman here. All of you in this room tonight and anybody who watches this must know that this is real shit. He's the real hero. We are just storytellers. We tell the stories that he actually lives. A round of applause for my brother, Artigan. Who's got a table at Bastion. ये दिल नहीं लगता नहीं तेरी तरह मेरी तरह पागल से वेरी गुड गॉड ब्लेस यू मामा की स्टॉक खरीदो बहुत पैसे कमा रहा है आजकल. We need to start. We need to stop and start again. Humans and animals crying out. We need to go and start again. We gotta change the ways. We gotta make amends. I forgot the lyrics. मेरा नाम हुआ तो क्या तू फिर भी जान है मेरी लबों पे नाम है तेरा हाँ दिल में याद है तेरी तू मेरी